और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, मैं कहूंगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था। मार्च, अप्रैल, मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं वो अपना 12% ही देंगे। I go over to today's announcements. I said there are three steps that we want to explain about the migrants. The first thing relates to free food grain. Free food grain supply to all migrants for the next 2 months. How is this? You're aware, we had already announced that for the public distribution system-based, card-based people who get their regular quota of rice or wheat and in their residences, we had added free 35 kgs for them, either of rice or wheat, and also said 5 kgs per individual, but per card 1 kg of pulse was announced earlier. And that additional 5 per month kg of wheat or rice was being given free. That was made clear. Now what we are saying is that continues, that remains intact. But for those who are non-card holders, meaning they are neither under the National Food Security Act, nor are they holders of any state level cards, for them they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice, or 1 kg of chana, so that is for per family. And if the person is remaining without card, he can also get it. We are engaging with the state governments to make sure that they know where these migrants are. They can approach them and give them, because most of these migrants who have no cards are staying in those camps which are being run either by the government or by the NGOs, and therefore, based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. So I know migrants are also moving out, either they're going back, very few are coming back. Irrespective, we are saying for the next 2 months, they shall get free rice or wheat and also 1 kg per card, per family. Without card also, you can get your rice, wheat or wheat or chana. So this will reach through the state governments. State governments will be implementing agencies. They will identify the migrants. They will take care of the full distribution, and they will provide the details. The initial assessment is what I've told you. The numbers may change depending on how the state governments are going to. We've made provision for this many. That's exactly what I want to convey. प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation where he said 5 pillars, and one of them is talking about technology-driven systems.
This is one classic example for that, where in order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he's in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card. One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021. 83% is already done. So all the states and union territories will complete full FPS automation by March 2021. आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last step for the migrant workers, we spoke about their food, their ration, portability of their ration. Now I'm talking about affordable rental accommodation for the migrant workers or the urban poor. Government has plans to launch, and very quickly it shall launch under the PM Awas Yojana for the migrant labor and urban poor, a particular scheme of affordable rental housing scheme, whereby we have 3 different ways in which we want to achieve it. We are asking incentivizing manufacturing units, industries, institutions and associations to, on their private land, build and develop affordable rental housing complexes. And we are also converting a lot of government funded housings in major cities which are remaining vacant into affordable rental housing accommodation. They can become affordable rental housing complexes, and this shall be done on a PPP mode through concessionaire agreements, through which they can invest somewhat some money to keep it up and also somewhat some money to make it ready, and then derive the rental, like the way the roads have
the toll little collections. Similarly here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same, central government organizations